Okay, so our next topic is alcohols, and alcohols are characterized by the OH group. Remember, this is not OH ion; it is OH group, which means it is neutral for now. Of course, when it is removed from alcohols, oxygen Asal because it Assalamu alaikum, Fasi. OH because it has high oxidation state. Sorry, O has a high electronegativity. तो उसकी वजह से अगर कभी भी इनकी splitting होती है तो usually it splits like this. And in very rare cases do they split making radicals. Usually वो इसी तरह से nucleophile electrophile में divide होते हैं और OH minus बनता है with a lone pair here and R becomes a positive और फिर उस पर obviously attack होता है. And we have seen that nucleophilic substitution is a pretty common reaction in this case. Alcohols बनते कैसे हैं? Alcohols बनाने के हमारे पास काफी तरीके हैं. So उनमें हम देख सकते हैं कि एक रिएक्शन हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास अगर लेट्स से एल्केन है और एल्केन से मैंने एल्कोहल बनाना है. सो डायरेक्टली मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है. There's just no way to make alcohol directly from this situation. और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है. Alkanes are neutral, alcohols are not neutral, alkanes are non-polar and alcohols are polar. तो उसकी वजह से ऐसा डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है. तो फिर हम क्या करें? बहुत सिंपल है. हम एल्केन से एल्कीन बना सकते हैं. ठीक है. अब एल्कीन क्या करेगा? एल्कीन में आप हाइड्रोक्साइड ऐड करो कहीं से. कैसे करेंगे? वाटर. द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन विल हैपन. एल्कीन में डबल बॉन्ड है, वहां पे वाटर ऐड हो सकता है और उस वाटर के ऐड होने से हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा. ठीक है. अब इसमें हमारे पास ऑब्वियसली कैटलिस्ट होता है. कैटलिस्ट क्या है? आपके पास यू नीड टू हैव 60 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 60 ATM, 300 डिग्री सेल्सियस, and the catalyst is phosphoric acid. So using this, you can easily make this. Acha, alkene se, there is a different way of getting that as well. There's a separate method of getting alcohol, and this method is called oxidation. ठीक है. और इसमें फायदा क्या होता है कि हमें अल्कोहल नहीं मिलता, हमें डायोल मिलता है. सो दिस इज माइल्ड ऑक्सीडेशन. माइल्ड ऑक्सीडेशन जिसका मतलब है कि you use oxidizing agent. This is the oxidizing agent, and you use it in cold situation. So cold oxidizing agent में हमें diol मिलता है. So this makes diol, and this makes simple alcohol. ठीक है. This is mono alcohol or whatever the other one. ठीक है. तो हमारे पास दो methods हैं अगर हमने एल्कीन से ये बनाना हो. ठीक है. अच्छा, अब लेट्स सपोज हम एल्केन से ये कैसे बनाएंगे? To get from alkane to alkene, the method is really simple. You do cracking, and that is how you get alkene. अच्छा, अगर मैंने अल्कोहल से वापस एल्कीन बनाना हो तो इसका मतलब है कि मुझे रिमूव करना पड़ेगा वाटर. सो दैट इज डिहाइड्रेशन. So how will that happen? I will need concentrated sulfuric acid to achieve that. And that is the relation between alcohol and alkene. अच्छा, अब एक और सिचुएशन भी है. If I don't want to get directly to alkene group, I can use my alkane and I can make halogen alkane. So you know that in the past we have seen कि आप halogen alkane कैसे बनाते हो. You can make halogen alkane from alkene. ठीक है. And you can make halogen alkane from alkane. तो इन दोनों से आप ये बना सकते हो. But the advantage of again using this is that you can do nucleophilic substitution and get alcohol from halogen alkane. कैसे? बहुत सिंपल प्रोसेस है. You use NaOH और KOH. बेसिकली आपको हाइड्रोक्साइड चाहिए क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोक्साइड होता है तो हेलोजन एल्केन में हेलोजन होता है. You simply do substitution. Okay. And this happens in the aqueous situation क्योंकि water will also help in this situation. और आपके पास हेलोजन एल्केन से अल्कोहल बन जाएगा. ठीक है. सो इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस.
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, तो साथ में ऑब्वियसली HCl या कुछ और इस तरह का बनता है। अच्छा, अब अल्कोहल से वापस जाना हो, बेसिकली मुझे OH को सब्स्टिट्यूट करना है और मुझे उसकी जगह क्लोरीन लेके आना है, तो उसके हमारे पास एक्चुअली मल्टीपल मेथड्स हैं। एक मेथड मैं आपको बताता हूँ कि वन ऑप्शन इज दैट यू यूज SOCl2 or you use PCl3 or you use PCl5. इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू हीट देम, दिस विल क्रिएट दिस। अच्छा, अब दिस विल ओनली क्रिएट क्लोरो वाला हाइड्रोजन एल्केन, HCl भी यूज हो सकता है, लेकिन अगर मुझे ब्रोमीन चाहिए तो फिर मैं HBr यूज कर सकता हूँ, और उसके साथ मुझे उसको हीट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर मुझे HBr नहीं यूज करना और मुझे फिर भी ब्रोमीन ऐड करनी है, तो मैं रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमीन यूज कर सकता हूँ, सो दिस विल क्रिएट ब्रोमीन। अच्छा, अगर मुझे आयोडीन ऐड करना है, मुझे क्लोरीन भी नहीं, ब्रोमीन भी नहीं, आयोडीन ऐड करना है, तो फिर मैं रेड फॉस्फोरस विद आयोडीन ऐड कर सकता हूँ, या मैं हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड कर सकता हूँ। सो इससे मेरे पास अल्कोहल में से वापस वो बन जाएगा। ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस कैन नॉट हैपन एट रूम टेम्परेचर, तो मुझे इन सबको करने के लिए इसको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ आई कैन गेट दिस। सो आई एम रिमूविंग दिस जस्ट सो वी कैन फोकस ऑन द मोर इंपॉर्टेंट अल्कोहल वाला पार्ट, ठीक है। सो एज यू कैन सी, यू कैन गेट alkenes from alcohol and you can get halogen alkane from alcohol, simply उसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है और हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, इनमें से जो सबसे बेस्ट मेथड है ना वो ये है, दिस इज बेस्ट फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, जब आप इसको यूज करते हो, अभी मैं आपको डिटेल में इसको बताऊंगा कि क्या होता है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी बाय प्रोडक्ट दैट यू नीड टू सेपरेट खुद से, ऑटोमेटिकली आपको एक ही सॉलिड मिलता है हेलोजन एल्केन, बाकी सब सेपरेट हो जाता है वो गैसियस सिचुएशन में। सो बाय प्रोडक्ट्स आर गैसियस, which means it's easy for us to separate the halogen alkane. Another advantage is that this is a very clean method and it has a very high yield. This is very efficient. So इस वजह से yield भी ज़्यादा है और इसको separate करना भी आसान है. So we have all of these methods to produce halogen alkanes from this. Alcohols में there are other options as well. For example, there is a thing called aldehyde, and a close relation of that is with ketone. So alcohols can be oxidized to make ketone and they can be oxidized to make aldehyde. We will study that again in detail. We haven't done that yet. In both of these reactions, हमें क्या चाहिए? हमें oxidizing agent चाहिए. So oxidizing agent, strong oxidizing agent होगा इसमें भी और इसमें भी, and of course you need reflux. You need to make sure कि उसके साथ होता है. One consideration: only if you have primary alcohol you can make this, and if you have secondary alcohol you can make this, and if you have tertiary alcohol तो वो दोनों नहीं कर सकता. अब primary tertiary होता क्या है? Alcohol में OH is going to be attached to one carbon, right? That carbon, what is that attached to? If it's attached to one carbon, we call it primary. If it's attached to 2 carbons, we call it secondary. And if it's attached to 3 carbon, that carbon, it's attached to 3 carbon, we call it tertiary. Tertiary alcohol ये नहीं बना सकता. Now, how do you go back? इससे वापस कैसे जाते हैं? How do you go from ketone to making alcohol? Again, जैसे आपने ऑक्सीडाइज करके ये बनाया तो आप रिड्यूस करेंगे. रिड्यूसिंग एजेंट का सिंबल होता है हाइड्रोजन, ऐसे ब्रैकेट में. सो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिनसे हम ये बना सकते हैं. सिमिलरली एल्डिहाइड से भी आप अल्कोहल वापस बना सकते हो और उसके भी हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है. बट वो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास एक्चुअली 2 रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो आपको आने चाहिए, वो मैं आपको लिख देता हूँ. So the reducing agents that we have are NaBH4, and this can be used in water, or lithium aluminum hydride in dry ether. This cannot be used with water, otherwise it will explode. So these are both your reducing agents.
Similarly, the oxidizing agents that we have, there are 4 of them. 2 of them are strong. So strong oxidizing agent हमारे पास हैं. We have K2Cr2O7, which is called potassium dichromate, goes orange to green when it reacts. Then we have KMNO4. We already know it goes purple to colorless. So these are strong oxidizing agents. We also have weak oxidizing agents. And weak oxidizing agents, there are 2 of them. One is called Pelling solution. Pelling solution, इनकी डिटेल आपको आनी जरूरी नहीं है. Just need to know that Pelling solution होता है. And the other one is Tollens reagent. They're both weak oxidizing agents. And Pelling solution में होता है copper ion. Okay. So what this does is that it changes its color based on what is it in. So Pelling solution is blue mostly, and because of copper 2 in it, and it goes to copper 1 because वो electrons gain करता है और दूसरी चीज को oxidize करता है, तो वो blue to red हो जाता है, तो copper 1. Tollens reagent में हमारे पास silver ion होते हैं, so they are colorless. Silver ions are colorless. So जब वो react करते हैं तो they make silver because again it's an oxidizing agent, so it will gain electrons. और उससे बन जाता है सिल्वर. और सिल्वर का कलर क्या है? सिल्वर ही होता है वो, मतलब सिल्वर मिरर भी बोलते हैं उसको. So you get this. So you have weak oxidizing agents and you have strong oxidizing agents. These two will not usually work on alcohols. Okay, the weak oxidizing agents, but they will oxidize other things. जैसे aldehyde को oxidize कर सकते हैं वो. Okay, so you can oxidize alcohols by using strong oxidizing agent, but weak oxidizing agent का थोड़ा सा आपको इतनी success नहीं होएगा. So it cannot oxidize alcohol. So they will, ये बस याद रखना कि they do not work on alcohols, even though they're oxidizing agents. But हमें strong oxidizing agent चाहिए होते हैं, which we don't have here. These will work, the K2Cr2O7 and all of that. Okay, so that's another important idea about alcohols. So there's a lot of information there. Alcohols का एक और reaction है जो हमारे syllabus में है, and that is what happens if you add alcohols to strong, very reactive metals like sodium. Then alcohols, interestingly, they can act as acid. So एसिड जब भी किसी मेटल के साथ जैसे सोडियम के साथ रिएक्ट करे तो क्या करता है? हाइड्रोजन आयन इज डिस्प्लेस्ड, राइट? सो अल्कोहल में भी ऐसे ही होगा. अल्कोहल होता है ROH. सो ROH में से H की जगह पे सोडियम आयन आ जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. So these salts can be made from this. So this spider map of alcohols is very useful because this kind of summarizes all the important memorizing facts about alcohols. ठीक है? Any questions on this? No sir. Perfect. अब जरा हम इनको डिटेल में देखते हैं. अगर हम देखें तो हमारे पास ओवरऑल कितने रिएक्शन हैं जिनसे अल्कोहल बन रहा है? 1 2 3. और कितने रिएक्शन हैं जो अल्कोहल खुद बना रहा है? 1 2 3 4. सर 4 है. So 4 से बन रहा है और 4 बना रहा है. ठीक है? So that is what we need to understand. अब ये दोनों रिएक्शंस हम जानते हैं कि इनमें क्या हो रहा है. इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता हूं.
एल्कीन की ऑक्सीडेशन हमने पढ़ी हुई है, दैट द डबल बॉन्ड ब्रेक्स एंड यू गेट डायोल. एंड अगर आपके पास कोई बहुत मतलब हॉट सिचुएशन हो, हॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो फिर अल्कोहल नहीं बनता. ठीक है, अनलेस इट इज टर्शियरी कार्बन. ठीक है, सो वो भी एक ऑप्शन है कि हॉट सिचुएशन में अल्कोहल बनता है कि नहीं बनता. बट खैर, लेट्स कंटिन्यू with the basic ideas of what alcohols are and what do they do, what can they. तो पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी में फर्क क्या है. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ कार्बन हियर एंड दैट्स अटैच्ड टू OH और उसके साथ तीनों हाइड्रोजन है, तो दिस अ प्राइमरी अल्कोहल. अगर उनमें से एक कार्बन है तो तब भी इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल. और ये दो कार्बन आ गए तो सेकेंडरी अल्कोहल, और ये तीन कार्बन आ गए तो ये टर्शियरी अल्कोहल. फर्क क्या पड़ता है? What is the impact of having a secondary or a primary or a tertiary alcohol? Again, the idea is the same that we have been studying. Alkyl groups provide positive inductive effect. So this has a much stronger positive inductive effect. तो इसका मतलब क्या हुआ कि if it makes carbocation, if this makes carbocation, it will be stabilized by positive inductive effect of alkyl groups or groups, which is the reason that it will do what mechanism? SN1 mechanism. Okay, so SN1 is preferred. तो अगर आपने इस OH की जगह पर कोई और चीज लेके आनी है, कोई इसको सब्स्टिट्यूट करना है क्लोराइड से या किसी और से, तो फिर SN1 is preferable in this situation. But in this situation, that won't work because the inductive effect of this alkyl is really weak. So उसकी वजह से क्या होगा कि ये जब भी रिएक्ट करेगा तो ये SN2 को प्रेफर करेगा. So that is the main idea. Remember, ये positive inductive effect वाला जो आइडिया है ना, ये बहुत जरूरी है, और this is a theme that goes throughout your organic chemistry, that alkyl groups or other activating groups have a positive inductive effect. एंड देन देयर आर ग्रुप्स दैट विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स. जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड जब भी किसी चीज के साथ अटैच होता है तो इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम इट. सो दैट इज अ, वी डोंट कॉल इट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, वी जस्ट से दैट इट्स एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो वो जब भी किसी चीज पे होता है तो वो उसके पॉजिटिव चार्ज को, वो उसके क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन को अनस्टेबल बनाता है. और जब भी एल्काइल ग्रुप्स होंगे या कोई भी ऐसी चीज जो विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो वो कार्बोकैटायन को स्टेबल आएगी. इसकी बहुत इंप्लीकेशन है. A2 में तो खास तौर पे ये बहुत ज्यादा यूज होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड इट. द मोमेंट यू सी अल्काइल, आपके जहन में पहला आइडिया ये आना चाहिए कि ये कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है. ठीक है. सिमिलरली हमें नजर आ रहा है कि OH इज अ पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव बॉन्ड ना. तो इसकी वजह से ऑब्वियसली कार्बन के ऊपर भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसको स्टेबलाइज करने में एल्काइल का काफी रोल होता है. बट ऑफ कोर्स दिस पार्ट हैज अ मोर पोलर कैरेक्टर एंड दिस पार्ट हैज अ लेस पोलर कैरेक्टर. जिसका मतलब है कि अगर आपके पास छोटा कोई भी अल्कोहल है ना, यानी कि ये अल्कोहल है फॉर एग्जांपल, तो इसमें पोलर पार्ट इज प्रिटी डोमिनेंट कंपेयर टू दिस पार्ट. क्योंकि हो सकता है इसमें 6 कार्बन की चेन हो, तो दैट विल बी अ रियली लॉन्ग नॉन पोलर टेल. So that is why these are more soluble in water, because water is polar, so they have hydrogen, they can make hydrogen bond with water. और उसकी वजह से they can kind of like dissolve in water. But at the same time, alcohols are very good solvents. तो organic के अंदर ना, alcohol is just like what water is for inorganic substances. जैसे इनऑर्गेनिक में हम देखते हैं ना कि वाटर कैन डिसॉल्व बेसिस, वाटर कैन डिसॉल्व एसिड्स, वाटर OH भी प्रोवाइड करता है, H भी प्रोवाइड करता है. और इन मेनी ऑर्गेनिक सिचुएशंस एथेनॉल भी ऐसा ही है, वो H पॉजिटिव भी प्रोवाइड करता है और वो OH माइनस भी प्रोवाइड करता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सिचुएशन इज. एंड एथेनॉल इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, जस्ट लाइक water is a very good solvent. So I say in many reactions we use it. In fact, we mainly work with two solvents in the whole A-level chemistry: water and ethanol.
And wherever you don't want OH or you don't want ions, you use ethanol. Okay. So that's the major difference or major reason for all the properties that alcohols have. How are alcohols different from other organic compounds? So alcohols में OH है, जिसका मतलब है polarity है, जिसका मतलब है कि वो polar characteristic लेके आते हैं. Alkanes don't have that. So that is the primary difference between hydrocarbons and alcohols. तो उसकी सारी properties वहां से determine होती है. So what do you think? Alkane है, let's suppose एक alkane है, उसमें 4 carbon है, और एक alcohol है, उसमें भी 4 carbon है. Which one will have more higher boiling point? Again, the strength of intermolecular forces determines how strong or weak they are, and that will show कि आपका boiling point कितना ज्यादा. तो in this particular case, OH की वजह से polarity हो जाती है. Polarity की वजह से permanent dipoles हैं, तो आपके पास force of attraction stronger है. So clearly, this one is going to be more like stronger, और इसकी वजह से आपके पास force of attraction ज्यादा हो जाती है. Similarly, alcohols में एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है. Don't forget the lone pairs on this oxygen. In lone pairs की वजह से obviously there is a bent structure of the carbon oxygen hydrogen situation. तो उसकी वजह से भी ये इन दोनों lone pairs को यूज करके वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं. Hydrocarbons are gaseous at room temperature, like छोटे hydrocarbons. छोटे alcohols are liquids. Clear difference हमें नजर आ रहा है because of the strength of intermolecular forces that they have. सही है. तो van der Waals forces are stronger, तो उसकी वजह से कोई भी alcohol हमें अभी तक नहीं मिला जिसमें जो सॉलिड हो रूम टेम्परेचर पे, बट एट द सेम टाइम गैस भी नहीं मिला. और सॉरी, सॉलिड तो मिलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कार्बन होंगे तो सॉलिड हो जाएगा, बट गैस वाला कोई अल्कोहल नहीं मिला because of the strong intermolecular forces that they have. Okay. What forces do they have? Induced dipole, temporary dipoles, or permanent dipoles, or hydrogen bonding? Which one? Hydrogen bond, people. Alcohols will make hydrogen bond with other alcohols, especially the smaller ones. अगर ये alkyl chain बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर उनके पास induced dipoles उसकी वजह से आएंगे. ठीक है, clear so far? कोई question? Now, one important use of fuel in our world is that alcohols are excellent fuels. So good. You can mix them with petrol and you can get something called gasohol. Pretty common in many parts of the world. Brazil में बहुत ज़्यादा use होता है. I think Brazil is the country that uses it the most. So basically it's a mixture of gasoline and alcohol. You can also use pure ethanol for meeting your energy requirements. And it is also renewable because you make alcohol from fermentation, and fermentation comes from glucose, and glucose you can keep on growing. Take care. Anything sweet can be converted to, anything with carbohydrates can be converted to alcohol, and that means कि आप उससे, it's a renewable source, unlike organic compounds. And what happens if you burn it? Simple. Alcohols will burn in oxygen to make carbon dioxide and water. Pretty clean as well, because कोई dangerous gas नहीं आ रही है, कोई acid rain का cause नहीं है. हाँ, of course, if oxygen is not in excess, तो फिर carbon monoxide या soot के problems create होते हैं. And that is true for almost all other fuels as well. So if you have plentiful oxygen, कोई issue नहीं है, except for the greenhouse effect that happens because of carbon dioxide and obviously water vapor. And greenhouse effect itself is not bad. It is the global warming that follows this, which is bad. Similarly, acids के तौर पे react करते हैं, so they have acidic nature. The acidic nature of alcohols, we just saw, for example, मेरे पास ethanol है, so what I can do is that I can react with sodium, for example, and it will produce. So here's the thing, what you have to remember. The H goes away because it's acting as an acid, so hydrogen ion आता है, and hydrogen gas is made. And whatever is left, that is the negative charge. And of course, that makes it a sodium positive charge, or ये negative charge. तो हमारे पास इस ion का नाम क्या होगा? So this is sodium, and this one is called eth oxide.
So ethoxide. Okay. So can you complete these two equations? Let's say I have OH here and I reacted with sodium. Please complete it. Similarly, if I have OH here as well as here, तो अब ये सोडियम के साथ एज एन एसिड कैसे रिएक्ट करेगा? प्लीज कंप्लीट इट. सो वेरी सिंपल, यू विल गेट, जहां पर भी हाइड्रोजन थी O के साथ वो रिमूव हो जाएगी. यू विल गेट अ सोडियम दैट आयन देयर एंड हाइड्रोजन गैस. सिमिलरली इसमें भी सेम थिंग, O minus Na plus O minus Na plus, and of course hydrogen gas. Two of them are going to be made in this case. Okay, of course you do the balancing later on. Same thing with sodium hydroxide, for example. If I add, let's say I have this, and I react it with sodium hydroxide, then it will produce C2H5O minus Na plus, and at the same time water. Interestingly, ethanol and water, they have roughly the same acidity. ठीक है? और acidity, you know, we get it from pKa. So pKa for water is 15.7, I think, and for alcohol was 16 होता, तो काफी similar होता, ठीक है? So you can get sodium ethoxide, but of course because water भी as an acid react कर सकता है, तो होता क्या है कि एक equilibrium create हो जाता है, ठीक है? You don't need to remember these values. Okay, just a simple fact that alcohol, ethanol, and NaOH, they behave in a similar manner. Sorry, क्या बोल रहा हूँ? Ethanol and water, they behave as equally strong acids. That's it. That's how we know. अब alcohol से देखते हैं क्या क्या बन सकता है. So how do you make alcohols? ठीक है, making alcohols. So उसके काफी रिएक्शन है हमारे पास. पहला रिएक्शन हम देखते हैं ऑक्सीडेशन वाला, ये हम पढ़ चुके हैं पहले बाय द वे, ठीक है, अल्कोहल फॉर्मेशन. तो एक बड़ा सिंपल सा हमने रिएक्शन देखा कि हमारे पास एल्कीन था, उसमें डबल बॉन्ड था, उसमें मैंने कोल्ड KMnO4 ऐड किया, KMnO4, तो मुझे डायोल मिल गया. और हॉट ऐड किया तो मुझे ओनली इन वन पर्टिकुलर केस टर्शरी एल्कीन के केस में मुझे मिला, अदरवाइज नहीं मिला. ठीक है, सॉरी, टर्शरी एल्कीन के केस में भी नहीं मिलेगा. सो हॉट से कुछ भी नहीं होगा. सिमिलरली अगर मैं, बाकी रिएक्शन हम देख चुके हैं, SN1 SN2 वो सब हम देख चुके हैं. मतलब हेलोजन एल्केन है, उसका भी हम देख चुके हैं कि कैसे बनाते हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है. लेट्स फोकस, isn't that what we just saw? Oh हाँ, अल्कोहल से क्या करते हैं? हाँ सॉरी गाइस, अल्कोहल से व्हाट कैन वी डू विद अल्कोहल्स, व्हाट आर दे गुड फॉर? हमने देखा वो फ्यूल के तौर पे काम कर सकते हैं. हमने देखा कि वो यू कैन यूज देम एज एसिड्स. लेट्स सी व्हाट एल्स कैन आई डू विद देम. सो यू कैन मेक अल्कोहल्स कन्वर्ट टू हेलोजन एल्केन्स. अगेन कैसे? OH को आपने सब्स्टिट्यूट करना है. हाउ डू यू डू दैट? सो देयर आर 3 ways ऑफ डूइंग दिस. एक मेथड क्या है कि मैं कोई भी अल्कोहल लेता हूँ, reacted with PCl5. The other option is PCl3, and the other option is SOCl2. All of these will react with alcohol and give me any of these. अच्छा, अब इनसे क्या होगा? And what is the advantage of doing this? So first of all, if you have PCl5, then here's the thing that I want you to understand. ROH. This will react with one chloride and will form HCl. In this case, in this case, in this case. This will react with another chloride. So RCl
RCl, RCl. And whatever is left will react with oxide. What is left here? Tell me. HCl बन गया, RCl बन गया. पीछे क्या बचा? Sir, phosphorus Just phosphorus? You had and sir 5 sodium fluorides. and chloride. Yes, sir. तो उसका नाम बताओ ना, वो चीज क्या बचेगी? You Sir, you had 5, उनमें से एक PCl3. इसके sir साथ react करता है, एक PCl3. इसके साथ. Yes, PCl3 बन गया. ठीक है. सो अब क्या होगा? अब PCl3 जब यहाँ पे आया तो अब वो ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन करना है, तो उससे क्या बनेगा बताएं? POCl3. POCl3. Yes, exactly. So it forms POCl3. Okay, tell me, over here, what will happen? Sir POCl. POCl, but there's a something else happens, and again, POCl H3PO3 forms होगा. that is not stable. POCl. So that POCl reacts with HCl, and so you get phosphorus acid, I think. Phosphor. I don't know the old name of that thing, but basically, ये बनता है. You don't get phosphoric acid, but you get just one less oxygen. So that is what you will get from here, and the remaining chlorides are all given to R part. Get it? So the chlorides, they are all given to R, and the phosphorus reacts with OH, and it gives you this thing. So why 3? Because you have 3 chlorides, so 3 OH are required. So that is how you get H3PO3. Get it? सर तो वो Cl पे 3 नहीं हो जाएगा RCl के साथ? RCl के साथ 3 नहीं होगा, 3 RCl बन जाएंगे. ठीक है. Okay. And then this one will create, if you had SOCl2, one of the chlorine went to H, one of the chlorine went to R. So what are you left with? जिसने O से react करना है. What do you get? Sir sulfur dioxide. Very good, sulfur dioxide. And here is the best part about this reaction. Because you're heating all of this up, you're not doing this at room temperature. This becomes a gas. This becomes a gas. They both just evaporate. They just go away. Of course, we don't let them go away. We collect them. We make use of them. ज़ाया तो नहीं करते हम. But the good part is you don't have to separate anything here. इसके case में you have to do fractional distillation. इसके case में you have to do fractional distillation of these. But in this case, you don't. You have this, दोनों separate करते हो आप और RCl बन जाता है. You just get it. Easy, right? ठीक है? So can we say that we can use any of these to test if you have an alcohol or not? Can I use, for example, this to check if something has alcohol? There's an unknown organic compound. I suspect कि इसमें alcohol है, OH group है. Can I react it with PCl5? Yes, sir. But here's the thing. A couple of important things. At room temperature, this is explosive. So just be careful when you do this at room temperature. Another thing, there are many other things that can react with PCl5. So we'll first have to get rid of all of them. So for example, again, I'm not sure if this is in your syllabus, but carboxylic acids react with PCl5. So अगर उस चीज में carboxylic acid भी हुआ और OH भी हुआ तो दोनों react कर जाएंगे, तो मुझे पता नहीं लगेगा. So, but interesting way of doing an explosion in lab. अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम? By the way, इसको हम फौरन separate करते हैं, otherwise ये भी react कर जाता है. Why am I telling you all this? You don't need to know this. अच्छा, you can also do the same thing with the bromine. अगर मुझे chlorine बनाना ही नहीं है, if I want bromo alkane from alcohol, so what will I do? I will simply first react with the phosphorus bromide. Okay, so I can get like PBr3, okay, and or PI3 even, and that will give me the same thing, H3PO3 plus RBr or H3PO3 plus 3RI. So just same reaction here. मतलब अगर आप PCl3 के साथ कर रहे हो तो ये बन रहा है, PBr3 के साथ कर रहे हो तो ये बन रहा है.
और कैसे, where do you get PBr3 from? Where can I get that? भाई बहुत आसान है, phosphorus को bromine से react करा दो. Come on. Really simple. Phosphorus को chlorine से react करेंगे, PCl3 बन जाएगा. Phosphorus को bromine से करेंगे, PBr3 बन जाएगा. Simple. So you just react them that like that. अच्छा. Can I react them with the acids? So for example, अगर मैं HCl के साथ react करता हूँ, will it react? So if I react with HCl, the only thing you need to understand is that for this to happen, carbocation has to be made. And in primary, secondary, and tertiary, which carbocation is the easiest to make? Tertiary. Tertiary, exactly. And that is why this reaction is fast for tertiary alcohol, but slow for the others. So that is why you technically can get the RCl that you're looking for with water. You can get that, but it is ridiculously slow for primary or secondary. So we always prefer other methods. But similarly, HBr, you can do the same thing. But do you think that HBr's reaction will be faster than HCl? No, sir. Why not? Is HCl more reactive or is HBr more reactive? Shouldn't HCl be more reactive? Think about it. HBr is more reactive than HCl. Does anybody understand why? The bond length between H and Br will be much bigger than the bond length between H and Cl. Why? Because bromide has one extra shell. Iodide has even one more shell. So iodide is a much bigger ion compared to chloride. So the bond strength or the bond length will be very different. So HCl has a stronger bond because the molecule is smaller. HI has a much bigger bond and so weaker bond. So iski wajah se when they start to react, HI is way ahead of HCl. It's a much stronger acid than HCl. And that is also the trend occurs for HF as well. HF is a very weak acid because the bond is so strong that HF hardly gives any H positive ions. But HCl is a strong acid, HI is even stronger. So that's one thing. Another consideration to remember here from inorganic chemistry is that while this method worked, I can just react HCl, and to increase the speed of this reaction, I can add this to sulfuric acid, for example. Okay, so if this is concentrated, तो फिर तो मुझे जरूरत नहीं, I can just get concentrated of this acid. But HBr के case में मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दूँ, एंड दैट विल प्रोड्यूस HBr. ठीक है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड of course, and that will produce whatever I want to make. But I can't do it with HI. I can't add H2SO4 there. Does anybody know why? Why can't I add sulfuric acid when reacting this thing with HI? Both are strong acids. They're both strong acids, but one extra important information. Learning Alliance वाला तुम लोगों के तो प्री मॉक में भी ये था. Sir, you didn't even tell me my grades for the pre-mock. I'll tell you after the class. So HI can react with sulfuric acid and can produce H2S. Okay? Because iodide ions will be oxidized. So hydrogen ion banenge nahi, hydrogen sulfide ban jayega instead. So that is why we use phosphoric acid when we do this. Okay? And that is how we produce this plus this. So again, iodine is coming in, bromine is coming in, just a couple of extra pieces of information that you should use. So it's all connected. Don't forget about what you studied in inorganic just because you're studying organic. Okay? If you don't want any of this, so what we usually do is we take red phosphorus, we react it with the whatever halogen we want to make, and then we take that for this reaction. So मतलब अगर मुझे ऐसे नहीं करना ना, तो मैं red phosphorus के साथ reaction करा दूंगा. That is relatively easier to do, but of course it has other
issues वो उसमें से poisonous gases बन सकती हैं, or so you have to be very careful when performing that reaction. All of this is in the spider map that we just made, right? So you can see that you can add iodine in presence of red phosphorus. If you don't want to use HI, don't do. Add it with red phosphorus and iodine. Similarly, red phosphorus and bromine will also work. HCl and HBr will work, but HI के साथ हमें phosphoric acid चाहिए, because HI can itself oxidize any sulfuric acid वगैरह अगर हमारे पास होगा. ठीक है. So there's a lot of memorization here. There's very limited concept, because इनकी जो mechanism है, we don't need to get into that. कि कैसे PCl3 के साथ कैसे acid बनता है. We don't need to get into that. Okay. Another thing you could do. Again, just something I'm thinking of. What if I use some salt of bromide? What if I use sodium bromide? Can I still do it? Of course I can. I can still do it, yeah. Again, not something you should memorize. You concentrate on that. Anyways, so we'll get it. ठीक है. Alcohols का और एक reaction होता है, which is esterification. But I'll teach you that with carboxylic acid. Now let's get to a very important reaction of alcohols, which is oxidation. We might need. Let's do that in the next class because we are almost out of time. So, any questions there? The main reaction that I need you to focus on is this one. How do you replace OH with halogen? Many options. As you can see, there is plenty of options. Okay. One way I would recommend doing this is, because there's a lot of memorization here, I would suggest that you try to make this by yourself. Try to make it 2 or 3 times yourself. It will obviously be easy to remember after that. All right. Any question? No, sir. No, sir. All right.